सर नासा ने हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है अच्छा। जिसका नाम है आर्टेमिस। ओह अच्छा। और ये आर्टेमिस 2 को उन्होंने भी हाल ही में लॉन्च किया। अच्छा ओह आपको पता होगा कि नासा पहले भी लोगों को चांद पर भेज चुका है, अंतरिक्ष हाँ यात्रियों हाँ को। बिल्कुल अभी फिर से 54 साल के बाद हाँ पहला मानव मिशन हाँ नासा करने वाला है, हाँ मतलब चांद पर लोगों को भेजने की तैयारी में। हाँ ओह हो। तो अभी जो आर्टेमिस 2 है, इस मिशन का जो लक्ष्य है वो ये है कि चांद के आसपास जाएगा ये, और ये 10 दिन का मिशन है। अच्छा। अंतरिक्ष यात्री चांद के चारों ओर घूमेंगे लेकिन उतरेंगे नहीं। ये सिर्फ एक तरह से कह सकते हो आप टेस्ट मिशन है। अच्छा। और फिर आगे इसके बाद में आर्टेमिस 3 का मिशन आएगा, तब इंसान को चांद पे उतारेंगे। ये इतना बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि 50 साल से ज्यादा हो गए और अब जाके इंसान चांद के पास पहुंचा है। हाँ। ये माना जा रहा है कि स्पेस रिसर्च का नया युग शुरू हो रहा है, और इसमें पहली महिला भी है और पहली बार कुछ नए देश के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। और इस मिशन के जरिए मंगल ग्रह तक जाने की तैयारी भी है। ओह ओह। तो हाल ही में वहां से कुछ अंतरिक्ष यात्रियों की वीडियो आई है सामने, अच्छा। जिसमें उनसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो उन सवालों के जवाब दे रहे हैं, उनका खाना दिखा रहे हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या ऐसा कि जब भी ये चांद पे जाना यात्री जो है ये सब ये लोग जो इनकी बात सामने जब आती है और इनका जब जिक्र होता है, आप यकीन नहीं मानो मन के अंदर एक सनसनी सी फैल जाती है, एक बेचैनी हो जाती है। और ये चीज़ें देखने में बहुत ही मजा आता है। बाबू भाई जब चांद पे गए थे पहली बार लोग, हाँ उस दौर में तुम्हें पैदा हुआ नहीं था। बिल्कुल नहीं हुआ तुम मुझे, तो थे बिल्कुल। ही से, तुमने देखा नहीं देखा तो पता नहीं। अरे हाँ। पर मेरे लिए तो नई बात ये रहेगी कि हमारे जमाने के अंदर चांद के करीब पहुंच रहे हैं लोग बाग, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यार जरूर बोले हाँ ये बात तो सही है कि तुम भेजे जो अब हाँ जो कि अब हम तो थे तो सही, लेकिन हमने भी आंखों में नहीं देखा। क्योंकि क्या है कि दूर से समझ अखबार में जो समाचार है उसमें हमने पढ़ा। और उस जमाने में एक ही चलते थे टीवी, वो भारत दूरदर्शन, एक ही चैनल। उस अच्छा। चैनल को कुछ झलकियाँ दिखाई थी। बाबू भाई हाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है हाँ कि सर अब अपनों को दिखाएंगे हाँ तो ये लाइव देखने का मौका लगेगा। हाँ। अब वो चांद पर उतरेंगे हाँ तो वो भी लाइव देखने का मौका लगेगा। ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में। बहुत बड़ी बात। और उसका बोल गया साक्षी हाँ। मैंने कहा हमने लाइव देखी। चलिए सब लगा इस बात में। अब We have ये you loud and clear, भैया यार CSA. कमाल की है। Thank you, Jeremy. We have many Canadians who are eager to ask you some questions. अच्छा। We're going to start right ahead with those. हाँ The first question is Yeah. from Dia in Mississauga, Ontario. Do astronauts get special training to do CPR in space? How do you actually do that when there's low gravity? सही यही सवाल है। सवाल भी है। सवाल लगता है देर से पूछ रही है। हाँ You just have to help me out with that question. Was that about CPR training? Is that what I caught? That's right, Jeremy. You're asked do you have special training to do CPR in space, and how do you actually do that in zero gravity? सीपीआर का मतलब समझता है। सीपीआर वो होता है कि किसी को अटैक आता है, अपन जमीन उल्टा उसको दबा दबा उसको करना ना, वो तो यार उन्हें बच्चे ने सवाल पूछा नहीं, बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि यार ये चीज़ अगर मत तुमको हो जाए तो तुम वो क्या करोगे। अब बाबू मेन चीज क्या है, वहाँ पे क्या गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो दिक्कत तो होना तय है। Yeah, it's a great question because we're all alone up here, just the four of us. And if we ever had to do it, we definitely want to plan. And so we talked about it on Earth before we came here. And one of our tests this week was actually to try those techniques out. And we have about 3 different spots in the capsule where we can do it. There's probably one that I can show you in the camera view if I just slide Reed over here. And so what I need to do is support myself and have him against something. So if I put my back here, we
We rearranged the wall. वाह यार And read here, I can push on him. So this is one of our CPR objectives in space. This is actually not the best one, but it's the only one you can see in camera. बाबू भाई कुल मिला के ये बात है कि इतना प्रभावशाली नहीं लग रहा है मेरे को, बस काम चला हुआ ही हाँ को मेरे किसी को दिक्कत है तो थोड़ी उसकी हेल्प हो सकती है, लेकिन वो उसका एकदम हाँ जो बराबर नहीं हो पाएगा हाँ। मुकम्मल नहीं। अच्छा जवाब है। Thanks, Jeremy. The next question is from Liam in Elsipogtog, New Brunswick. And I wonder, do you still see stars in outer space? आवाज बहुत देर से पूछ रही है बाबू भैया। Yeah, I was actually just talking to my crewmates about that today. I've definitely seen stars in outer space, and I was saying I haven't seen as many as I thought I would. So read. We have so much illumination from the sun on the moon and the earth right now. It is hard at times to see stars. Just like when you walk out in the daytime, you see a blue sky but no stars. We look outside and we see the black space and no stars. But tonight we're going to be pointed into deep space and we're going to turn out all the lights in the spacecraft for the first time on the mission. And if you give yourself about 20 or 30 minutes, we do this all the time on the International Space Station. Christina and I just have great fond memories of this. You'll start to see the stars, and if you give it enough time, you will see so many stars. It's hard to see the constellations because there are so many stars out there. And the coolest part of those stars is they do not twinkle at all. They are just perfect. They almost look fake. They're just perfect pinpricks of light. So that is our homework for tonight, Jeremy. We are doing that. अच्छा अब बाबू भाई ये सोच रहा हूँ मैं तो क्यों उनके यान के आसपास रोशनी कितनी है वो रोशनी यहाँ पे अंदर की बंद करेंगे तब जान के इनको तारे नजर आएंगे। बताओ आप कमाल है यार ये भी यार। ये तो सब सोच के मजा आता है। वो रोशनी बंद करेंगे फिर वो तारे दिखेंगे और अपने आप में अलग नजारा है ना। बिल्कुल बताओ बिल्कुल बिल्कुल। Great. We now have a question from students in Sanikiluaq, Nunavut. What types of food do you eat in space and how do you cook it? बहुत अच्छा सवाल है। बताइए सर। क्या है मैम सर तो वो है जमीन पर सवाल जो पूछ रहे हैं जमीन से वो है आसमान पे तो वहाँ से यहाँ तक बोलने में जो मैसेज जो है जो सवाल पूछ रहे हैं वो आवाज उनको अंदर से पूछ रही है। Yeah, so I've only been eating space food for a couple of days here, but Christina, she lived in space for pretty close to a year. She's eaten a lot of space food, and so we have a few items here to show you. Christina, you want to help me out? Sure. Let's see what we're going to pull out. So my dinner. This is Jeremy's dinner, and in space you really just eat all of your food out of bags of some kind, plastic bags or little metallic bags, because we have to rehydrate a lot of our food. This is actually shrimp cocktail. And this has been rehydrated already, so we added water to it, and the shrimp soaked back up the water, and it's actually pretty tasty. This is an example of a food that has not been rehydrated yet. It got all dried out for flying up here in space, and those are green beans. So we do have to eat our vegetables even in space, but don't worry, they do give us mac and cheese. खाना बहुत अच्छा मिले कोई तो नहीं अब सब्जी मिले माल मच्छी मिले वो क्या चाहिए आपको यार तो भाई इंसान को इसी चीज का शौक है और वो चीज मवा मिल रही कुछ सवाल नहीं। बाबू भाई ये जो खाना खाते हैं ये खाना खाने की बहुत इच्छा है मेरी, यहाँ पे कहीं मिलता हो तो मैं कहूँ ऐसा लाके यार मिलता नहीं है यहाँ पे मिलता नहीं है। नहीं अब दर्शकों को पता हो तो कमेंट में बताएं कहाँ पे मिलता तो लाके खा सके हम भी। बहुत इच्छा हमारी यार, दिली मुराद है हमारी। Nous avons maintenant une question dans la salle. Émilie. Bonjour Jérémy, je m'appelle Émilie et je viens de Saint-Bruno au Québec. Sur la Terre, est-ce que lorsqu'on est autour de la Lune, on voit un croissant de taille? पल कीमती मत हो यार। And before I answer that question, I got to go back one. Here's the maple syrup that we opened up and had at lunchtime today. So we had a little bit of Canada on board today, and I shared it with my crewmates, and I think they enjoyed that. So it was great.
Pour la question, en fait, oui, on voit des croissants de la Terre et c'est quelque chose d'incroyable pour moi. Par exemple, la journée avant le TLE, le Translunar Injection, quand nous sommes réveillés, on a vu une demi-terre et ça c'était la première fois que j'ai vu quelque chose de magnifique comme ça. Et pendant cette journée-là, on a vu la terre au complet et on a vu la terre noire. Alors ça c'était une perspective vraiment unique. And the question was, do we see a crescent Earth just like we see a crescent moon when we're in space? And the reality is we do, and we've seen it all. We've seen a half Earth, partial crescent Earth. We've seen a dark Earth. And when we woke up for TLI, we saw it looked like a bowl of Earth just sitting there for breakfast in the sky. It was really, really unique. Thank you, Jeremy. The next question is from Joel in. अपने देखो कभी चंदू आधा कभी पूरा कभी कुछ ऐसा ऐसा दिखता नहीं ऐसा वो ये बचा ना हम पृथ्वी हम हमारे को ऊपर से ऐसी दिखती है ओ यार चमत्कार है तो यार अपने आप में यार वो तो कटोरे जैसे कटोरे ऐसे कटोरे दिख गई है Edmonton, Alberta. You undertook lunar geology training in Canada, Iceland, and at the Lunar Sample Laboratory facility. Are there any lunar landforms that you're particularly excited to see up close? यही सवाल है भैया मैडम आप तो जवाब Absolutely. We've done some incredible geology training on Earth, and one of them, as you mentioned, was in Canada at Kamastaston Crater. And I got the honor of training there with Jeremy and Jenny Gibbons and a great team of geologists, scientists from NASA and many institutions. We did learn a lot about how, craters form and a lot about the mineral that makes up the moon. What we are probably most excited as a crew about seeing on the moon would be an amazing feature called Oriental. And it is sometimes known as the Grand Canyon of the Moon because it has all kinds of multi-layered crater rims and a lot of different land formations, and it has mare, like kind of lava fields all throughout it in different shapes, and it's very distinctive. And no human eyes previously had seen this crater until today, really, when we were privileged enough to see it. So we can't wait to share more when we get closer to the moon. यार बड़ा सुंदर गजब लग रहा है कि चांद पे भी ऐसी ऐसी जगह मौजूद है कमाल की बात है भैया बाबू भाई सोचो आप तो कितना उनको प्रशिक्षण जो है कितना तगड़ा दिया हुआ इतनी मेहनत करे होगे प्रशिक्षण के लिए उन्होंने प्रशिक्षण को मैंने तो आज रंग हराई है कि आज जान के यहाँ पे आ गए वो जगह मौजूद है अगर प्रशिक्षण नहीं होते यहाँ तो यहाँ नहीं पहुँच सकते सही बात Thanks so much. Misab in Vancouver, BC has a question for you as well. Which movie do you believe is the most accurate representation of space? हम भी देख चुके हैं फिल्में तो बताओ यार Well, there are many great space movies. For our specific example here, one that really captures it, I think, is Apollo 13. Now, we haven't had any major malfunctions like Apollo 13 did, but they ended up on a very similar trajectory to us. And that movie really shows you a lot what it's like with just 3 humans, trapped in a tiny capsule and surviving in space together. Sure. So that's just one of many, but it's one of my favorite space movies. You have a space movie? That's one of my favorites. Yeah. अबे साले सवाल पूछ रहे हैं क्या डर रही है यार भाई आपने सवाल ऐसा पूछा आपने कोई फिल्म देखी और उनको फिल्म ये उन्होंने बॉलीवुड फिल्म देखी कुछ जो पहले वैसे थे वो फंसे थे अब उस बारे में वो सोचेंगे तो काम तो जनक वो जल्दी जाएंगे इसलिए सवाल हमने गलत बताया All right, we have another question, Jeremy, from here in the room. I'm Adelaide from Ottawa, Ontario. How has your family helped you prepare to go to space? And do your kids get time off school? ये बंदा सवाल है हाँ यार साधारण
हंसने वाले सवाल Of course, in life you do things as a team, and my primary team is my wife and my 3 kids, and they have been extraordinary in supporting me through this endeavor. Some of the ways that they've helped me is just by giving me grace. Sometimes with this job, I can't be there for them when they would like me to be there. There's a lot of sacrifice from the family, and so they've definitely done that for me. And they've been my greatest cheerleaders along the way. So super grateful for Catherine, Devin, Ashley, and Caitlin. And did they get time off school? Well, yes and no. So they had time to come to quarantine and be with me to support me in the launch. But what it meant was they were doing a lot of homework, doing a lot of self-study, and they were still getting it done. They were just getting it done from quarantine. वाकई में साहब ऐसे कामों के अंदर परिवार का, बच्चों का, पत्नी का वाकई में बहुत बड़ा वो रहता है सहारा। अगर वो लोग इनको हिम्मत नहीं कि आप बेफिक्र होके जाओ, अपना काम करो, जहाँ की फिक्र, यहाँ का टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, जो भी होगा हम ये समझ देंगे, आप खुशी को खुशी मजा जाओ, और जो वो खुशी आ गया। बाकी में अगर ये हिम्मत और ये सारा परिवार नहीं दे तो यहाँ तो चाहेंगे तो छोटे मोटे में भी मुश्किल होता है। ये बात बहुत सही बोली। इन्होंने सही बात बोली कि बहुत सारी चीजों को क्या त्यागना पड़ता है। बिल्कुल, इन्होंने बहुत सारी चीजें त्यागी, और परिवार वालों ने बहुत सारी चीजें त्यागी जब जान के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आए हैं, ये बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा योगदान है ये भी। Thanks. अगला सवाल लाओ भाई। Apsley, Ontario has a question. Why does water become spherical in space? हाँ यार, पानी का गोल गोल लड्डू बन जाते हैं बाबू भाई यार, हवा उड़ता है नहीं। Well, my 3 crewmates lived on board the International Space Station for a significant amount of time. And so they've done a lot of playing with water, and so they were giving me a tutorial today at lunch. So maybe I'll just get Reed to give you the tutorial that he gave me right now. Let me. Yeah. What? Well, here you can see the spherical balls that I just let loose on the cabin. All right, Reed. It's really the surface tension. If you ever just see a little drop of water on your finger, even though it looks like a convex little drop on your finger in space, that surface tension is all around. So it just creates a perfect bubble because there's no gravity to act on it. And so it just stays in this perfect sphere, and it actually becomes a lens. And earlier today, we were laughing because we could make Jeremy's face go upside down or right side up, and it's pretty amazing. कमाल लग रहा है, अद्भुत लग रहा है, सही कह रहा हूँ। Victor's sending us a towel to clean up the mess. पूरा खेल दबाव का है। अब बाबू पे कितना अजीब लगता होगा यार, ऐसा लगता होगा पानी पीना क्या कुछ चीज चबाने की है यार। वो जगह ही ऐसी तो वो भी क्या करेंगे, वो तो चीज लगेगा, अब उसका उपयोग कैसे करना है वो तो वो उनको ट्रेनिंग में मिलेगी बात की। Thanks for that demonstration. We now turn to Jackson from Calgary, Alberta. अच्छा। How did you get to be on the Artemis II mission? ये तो नौवीं साल पिछले बंदे हैं। I'll answer while Jeremy's making a nice water bubble for you. Yeah. How did Jeremy get to be on the Artemis II mission? Jeremy and I were selected as astronauts together back in 2009. And he was a member, obviously, of the Canadian Space Agency, and I was a member of NASA. And when Jeremy interviewed to be an astronaut, our chief astronaut, Peggy Whitson, was on their board. And Peggy came back from that interview and said, if Canada doesn't hire Jeremy, NASA will hire Jeremy. He did that well. So I think if you go through Jeremy's life, he grew up just a very inquisitive kid. He had huge dreams. He saw a picture of Neil Armstrong in an encyclopedia a long time ago walking on the moon, and it just sparked his curiosity and his imagination. And he always tells people that the most important thing when you have a dream and an aspiration is that you tell people, you talk about that. Some people may not believe you can do it, but you know you can do it. And the more you talk about it, the more people will begin to believe that you can make your dreams come true. And that is exactly what Jeremy did. So he turned his tree fort into a spaceship, and he became a fighter pilot in the Royal Canadian Air Force. And then he got to the Canadian Space Agency in 2009, and the rest is history.
And I'm still not बहुत that लंबा good सफर at है उनका water है। and space yet. I'm still learning. उनको सेशन पकड़ा 2009 में, आज चल रहा है क्या 2025 26 26 चल रहा है। अब 2026 के अंदर वो अब गए हैं, तो ये ना 18 साल उन्होंने अपनी सारी लाइफ सारी जिंदगी उन्होंने ट्रेनिंग में गुजारी। 18 साल के बाद उनको ये मौका मिला। अभी कितनी लंबी ट्रेनिंग होनी बहुत लंबा यार। अब बाबू भाई अपन कह देते हैं क्या, हंसी मजाक में समझ लो कि तुम चले आओ मैं चले जाऊँ, कह देते हैं अपन। अब लोग बाग 18 साल की ट्रेनिंग करते हैं ना, तो अपना नंबर कब आएगा? है क्या नहीं? अपन काहे में यार, काय में भी नहीं है। एक बात ये तुम्हारी बात है, कैसे टीचर आदमी सारी चीज को मैनेजमेंट कर रहा है, और वो जो ऊपर चैनल का चक्कर लगा रहा है। अपने एक ट्रैक्टर ट्राली या कोई घुका रहा है तो जाले ना उसी ले लेते, लेकिन कितनी मोबाइल वाले इतनी ऊपर और चैनल का चक्कर लगा ऐसी जगह, बाकी में बहुत दिमाग बहुत बड़ी बात है अपना। बहुत सही बात। बाबू भाई जब भी ऐसी बात आती है अंतरिक्ष की ना, इसकी तो मेरे को सोच कर डर लगता है। अब ये चारों तो कितनी शानदार तरीके से अभी जिंदगी गुजारी रहे हैं। अभी जिंदगी में उस जगह पहुंच गया, वो तो अभी पहुंच गए लगभग। हंसी खुशी है, हंसी खुशी है। अब खुदा ना खास्ता कुछ हादसा वादसा हो जाता है, हादसा होने में देर नहीं लगती है। एक मिनट और सरकार तो हाथ उठाई थी कि हम समझ आते हैं, ठीक है। वो जो कहे भाई हमने ट्रेन देखा वहाँ कोई जगह हमने परिवार वालों के ऊपर बीतती है, इनके ऊपर बीतती है, भगत नहीं इनको जानते हैं, इनके टेंशन परिवार वालों को, बीवी को, बच्चों को, तो सही बात। अब बाबू मेरे हिसाब से तो इनसे क्या पहले साइन करवा लेते होंगे कि तुम्हारी हंसी खुशी से राजी मर्जी से तुम जा रहे होगे। उनके परिवार वाले की भी मर्जी होती होगी, वो इनके बीमे होते होंगे करोड़ों अरबों रुपए के, जब जाके जाते होंगे। यूं में तो कोई नहीं जा सकता है मेरे हिसाब से। भाई वो तो कहेगा पीछे का सारा कौन, अब किसी का छोटा बच्चा, किसी का सबका परिवार लगे हैं। तो अब सरकार ने बोल दिया भाई हमने सही ये तो लिखा हुआ, हमने साइन करा लिया, अब होगा हमने करा, अब उनकी जवाबदारी कौन ले? तो बीमा इनके होते हैं और बीमा का इनको मिलता है। यार भैया काम में तो अपने यही है कि ये जिस जगह गए हैं सुरक्षित हंसी खुशी जिस तरह गए हैं उसी तो चला वापस आ जाए। अब वो जो आगे का जो इनका जो मिशन आगे का फॉलो करेंगे। सही बात। वाकई में कुल मिला के बहुत ही शानदार जानदार वीडियो लगी है, और इतना ज्ञान दिया है कि बस पूछो मत, पहली बार देखने का मौका लगा है इस तरीके की चीज को। बाबू क्या कहते हो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके जो सवाल जो पूछेगा बहुत अच्छे से सवाल पूछेगा, ताकि उनको भी ये लगेगा इनको कोई दिक्कत नहीं, और वो उनको भी ये लगेगा हाँ बिल्कुल हम सुकून आराम से इसी तरह की वीडियो पे और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।